राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा सर, श्रीयुत केशव महंत सर, श्रीयुत अशोक सिंघल सर एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर उपस्थित सभी को एक बार फिर से नमस्कार। योग विद्या भारत में हजारों वर्ष पूर्व से उपस्थित है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने ये संपदा हमें सौंपी है और आज हम सभी लोग इस योग परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और ना सिर्फ शारीरिक रूप से अपितु मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए यह महान परंपरा को हम अपना रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। योग में अनेक साधन हैं जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, षटकर्म, मुद्राबंध इत्यादि। और ये सभी अभ्यास हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक है। चिकित्सा विज्ञान में यह विज्ञान सम्मत हो रहा है कि किस प्रकार योगाभ्यास हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस और अन्य डिसीजेस में भी लाभदायक है। इसलिए न सिर्फ भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में योग को अभ्यास किया जा रहा है। নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। সকলোলৈকে 10ম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই আজি প্ৰাৰ্থনাভ্যাসৰ দ্বাৰা আমি যি যোগাভ্যাসৰ কালাংশ আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ হাতৰ নমস্কাৰ মুদ্ৰাত লৈ লওক। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखिए, आंखों को सहजता से बंद कर लीजिए, চকু সহজতে বন্ধ কৰি ল'ম। यहाँ से प्रार्थना बोली जाएगी। आपसे आग्रह है हमारे बाद प्रार्थना को दोहराना। আমাৰ ইয়াৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা আমি গাই যাম, সকলোৱে দোহৰাই যাব। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता संवो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, दुईখন हाथৰ তলুৱা মোহাৰি লওক। आंखों पर चेहरों पर लगाइए, চকু আৰু মুখমণ্ডলত দুইখন হাত মোহাৰি লওক। धीरे से आंखें खोल লাহে लीजिए। লাহে চকু খুলি লওক। योगाभ्यास का क्रम हम शुरू करेंगे शिथिलीकरण के अभ्यास से। যোগাভ্যাসৰ কালাংশ আমি আৰম্ভ কৰিম শিথিলীকৰণ মুদ্ৰাৰ দ্বাৰা। आप सभी लोगों से आग्रह है अपनी जगह पर खड़े हो जाए। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ স্থানত থিয় হৈ লওক। प्रथम अभ्यास है ग्रीवाचालन। शीतलीकरण के अभ्यास में बहुत सारे आसन हैं जिसमें हम गर्दन, ग्रीवा, कमर और पैरों के लिए अभ्यास करते हैं और इसके माध्यम से जोड़ों को शिथिल किया जाता है। प्रथम अभ्यास है ग्रीवाचालन।
अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का अंतर रखें। प्रथमे आमी करिम ग्रीवा मुद्रा जार बारे आमी दुइखन भरिर मजत 2 বা 3 इंच व्यवहार करिम। दोनों हाथों को कमर पर रखें, दुइखन हाथ कपालत राखि लওঁ। श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाइए। उशाह एरि एरि आमी डिঙিৰ অংশ আগলৈ মলাই লৈ যাম। श्वास लेते हुए सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाइए। उशाह লৈ पुনৰ ডিঙিৰ অংশ পিছলৈ লৈ যাম। यह एक चक्र हुआ, इसी प्रकार 2 बार दोहराएं। यह হৈছে এটা কমনিকা। এতিয়া আমি পুনৰ দুবাৰ কৰিম। উশাহ এৰি আমি সন্মুখলৈ হালাই লৈ আহিম। পুনৰ উশাহ লৈ আমি পিছফালে সলাই লৈ যাম। পুনৰ উশাহ এৰি সন্মুখলৈ লৈ আহিম। পুনৰ উশাহ এৰি আমি পিছফালে সলাই লৈ যাম। এতিয়া মধ্য অৱস্থাত আহিম। इसी क्रम में अगले अभ्यास में हम गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर झुकाएंगे। এই অভ্যাসতে আমি আমাৰ ডিঙিৰ অংশ সোঁ আৰু বাওঁফালে ঘূৰাম। श्वास अंदर लीजिए, उशाह लওক। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाइए। उशाह एरि डिঙিৰ অংশ সোঁ দিশে লৈ যাম। श्वास लेते हुए गर्दन को बीच में लाइए। उशाह লৈ পুনৰ মধ্য অৱস্থালৈ আহিম। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाइए। उशाह एरि पुনৰ বাওঁ দিশে আমি ডিঙিৰ অংশ লৈ আহিম। यह एक क्रम हुआ, 2 बार और दोहराएं। पुনৰ उशाह লৈ मध्य অৱস্থালৈ আহিম। उशाह एरि সোঁ দিশে লৈ যাম। पुনৰ उशाह লৈ मध्य অৱস্থাত। पुনৰ उशाह एरि বাওঁ দিশে লৈ যাম। पुনৰ उशाह লৈ मध्य অৱস্থাত। अगले चरण में गर्दन को हम दाएं और बाएं ओर घुमाएंगे। ইয়াৰ পিছতে আমি আমাৰ ডিঙিৰ অংশ সোঁ আৰু বাওঁ দিশে ঘূৰাম। सिर को सीधा रखते हुए श्वास अंदर लीजिए। মূৰৰ অংশ সন্মুখত ৰাখি ডিঙিৰ অংশ আমি সোঁ দিশে ঘূৰাম। श्वास अंदर लीजिए। उशाह लওঁ। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाइए। उशाह एरि এতিয়া ডিঙিৰ অংশ আমি সোঁ দিশে ঘূৰাম। श्वास लेते हुए गर्दन को बीच में लाइए। उशाह লৈ পুনৰ মধ্য অৱস্থালৈ ঘূৰিম। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाइए। उशाह एरि এতিয়া বাওঁ দিশে লৈ যাম। इसी अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। पुনৰ उशाह লৈ আমি মধ্য অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিম। পুনৰ উশাহ এৰি আমি সোঁ দিশে লৈ যাম। পুনৰ উশাহ এৰি লৈ মধ্য অৱস্থালৈ আহিম। উশাহ এৰি আমি বাওঁ দিশে লৈ যাম। पुনৰ उशाह লৈ আমি মধ্য অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিম। इसी में अगले क्रम में गर्दन को हम चारों तरफ गोल घुमाएंगे। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আমাৰ ডিঙিৰ অংশ চাৰিওফালে ঘূৰাম। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाइए। उशाह एरि আমি ঠোঁটৰ বুকুত লগাম। और श्वास लेते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घुमाइए। उशाह লৈ আমি ঘড়ী কাটাৰ দিশত আমাৰ ডিঙি অংশ ঘূৰ্ণন ক্ৰিয়া সম্পাদন কৰিম। 1 2 3 এতিয়া ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীত দিশে ঘূৰাম। 1 2 3 पुनः मध्य अवस्थाলৈ ঘূৰি আহিম। अगला अभ्यास है स्कंद संचालन। ইয়াৰ ঠিক পিছত আমি অভ্যাস কৰিম কান্ধৰ সঞ্চালন ক্ৰিয়া। हाथों को नीचे कर लीजिए। দুইখন হাত তললৈ নমাই আনক। और दोनों हाथों को सामने से कंधों के बराबर उठाइए। এতিয়া দুইখন হাত কান্ধৰ সমান্তৰালকৈ ওপৰলৈ উঠাই আনক। हाथ की उंगलियों को कंधों के ऊपर रखिए। দুইখন হাতৰ আঙুলি আমি কান্ধৰ পৰা স্পৰ্শ কৰাই লওঁ। अब हमें कोहनियों को गोल चक्राकार घुमाना है। এতিয়া আমি দুইটা কিলাকতি ঘূৰ্ণন দিশে ঘূৰাম। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार। 1 2 3 পুনৰ বিপৰীত দিশে ঘূৰাম। 1 2 3 हाथों को नीचे कर लीजिए। দুইখন হাত তললৈ। अगला अभ्यास कटी चालन। ইয়াৰ পিছৰ অভ্যাস হৈছে কটি চক্ৰাसन। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 से 2 फीट की दूरी बनाइए। দুইখন ভৰিৰ মাজত 1 বা 2 ফিটৰ ব্যৱধান ৰাখি লওঁ। दोनों हाथों को सामने से कंधों के बराबर उठाइए। দুইখন হাত কান্ধৰ সমান্তৰালকৈ লৈ আহক।
हथेलियां एक दूसरे की तरफ, हाथर तलुआ सम्मुख सम्मुखी देखिए। श्वास अंदर लीजिए, उशाह लय श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को दाहिनी तरफ घुमाइए। उशाह एरी आमी दुइखन हाथ सों दिशे घुराम। श्वास लेते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उशाह लय पुनर सम्मुखले घुरियाई दिम। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बाईं ओर घुमाइए। उशाह एरी दुइखन हाथ आमी बाওঁ दिशे घुराम। इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। पुनर उशाह लय आमी सम्मुखर फाले আহিম। पुनर उशाह एरी आमी सों दिशे লৈ যাম। उशाह एरी पुनर सम्मुखले। पुनर उशाह एरी आमी তাৰ বিপৰীত দিশে কৰিম। उशाह लय मध्य अवस्थाনত ঘূৰিম। दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए। दुइखन हाथ तलলৈ নমাই। इस क्रम में अंतिम अभ्यास है घुटना संचालन। এই অভ্যাসৰ अंतिम अभ्यास হৈছে आठुर संचालन क्रिया। दोनों हाथों को फिर से एक बार कंधों के बराबर ऊपर उठाइए। दुइखन हाथ कांधर समान्तराल লৈ আহক। श्वास अंदर लीजिए, उशाह लওক। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को हल्का सा मोड़ लीजिए। उशाह एरी दुइखन आठुर भाঁজ কৰি লওক। थोड़ी देर 3 सेकंड के लिए बने रहिए। 1 2 3 श्वास लेते हुए वापस उशाह লৈ पुनः उभতি আহক। एक बार फिर इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास अंदर लीजिए, उशाह लওক। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए। पुनः उशाह एरी आमी आठुर भाঁজ কৰি লম। 1 2 3 उशाह एरी पुनः আগৰ हाथों को सहजता से नीचे कर लीजिए। दोनों हाथों को कलाइयों से एक दूसरे से बांध लीजिए। हाथ की हथेलियों को क्रॉस कर लीजिए। आंखें सहजता से बंद। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य। थोड़ी देर विश्राम की स्थिति। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। লাহেকৈ চকু খুলি লওক। आगे हम कुछ योगासनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। ইয়াৰ পিছত আমি যোগাসনৰ কাৰণে অভ্যাস কৰিম। पहला अभ्यास है ताड़ासन। প্ৰথম অভ্যাস হৈছে তাড়াসন। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 से 3 इंच की दूरी बनाइए। তাড়াসনৰ বাবে আমি ভৰি দুখনৰ মাজত 2 বা 3 ইঞ্চ ব্যৱধান কৰি লওঁ। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए। দুইখন হাতৰ আঙুলি আমি সংযোগ কৰি লওঁ। हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। দুইখন হাত আমি মূৰৰ ওপৰত ৰাখি सिर के ऊपर रख लीजिए। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर तानिए। এতিয়া উশাহ লৈ আমি দুইখন হাত ওপৰলৈ টানি एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाइए। গুৰুহাৰ অংশ আমি ওপৰলৈ উঠাই লৈ 5 सेकंड तक रुकिए। 1 2 3 4 5 श्वास उशाह छोड़ते हुए नीचे। আমি তললৈ। पुनः इस अभ्यास को 2 बार दोहराएंगे। পুনৰ উশাহ লৈ আমি দুইখন হাত ওপৰলৈ লৈ যাম। গুৰুহাৰ অংশ ওপৰলৈ উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম। খন্তেক অপেক্ষা। 1 2 3 4 উশাহ এৰি আমি দুইখন হাত মূৰৰ ওপৰত ৰাখিম। পুনৰ উশাহ লৈ দুইখন হাত ওপৰলৈ লৈ যাম। গুৰুহাৰ অংশ আমি ওপৰলৈ উঠাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 1 2 3 4 লাহে লাহে আমি দুইখন হাত তললৈ নমাই दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए। দুইখন হাত আমি শৰীৰৰ দুই কাষে ৰাখিম। अगला अभ्यास है वृक्षासन। ইয়াৰ পিছত আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বৃক্ষাসন। फिर से दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी रखें। দুইখন ভৰিৰ মাজত 2 ইঞ্চি বা 3 ইঞ্চিৰ ব্যৱধান কৰি লওঁ। अभ्यास हम दाहिने पैर से शुरू करेंगे। অভ্যাস আমি সোঁ দিশে কৰিম। दाहिने पैर को हाथ से पकड़कर जंघा पर रख लीजिए। সোঁ ভৰিখন আমি হাতেৰে স্পৰ্শ কৰি বাওঁ আঁঠুৰ কাষত ৰাখি লওঁ। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। উশাহ লৈ দুইখন হাত ওপৰলৈ লৈ যাম। थोड़ी देर नमस्कार मुद्रा में बने এই অৱস্থাত নমস্কাৰ মুদ্ৰাত আমি খন্তেক অপেক্ষা কৰিম। 1 2 3 4 5 6 উশাহ এৰি আমি দুইখন হাত মেলা মেলাই তললৈ নমাই আনিম আৰু ভৰি দুখন তললৈ নমাই আনিম। इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। এই অভ্যাস আমি বাওঁ দিশে কৰিম। বাওঁ ভৰি ভাঁজ কৰি আমি সোঁ ভৰিত লগাম। উশাহ লৈ দুইখন হাত নমস্কাৰ মুদ্ৰালৈ লৈ আনিম। খন্তেক অপেক্ষা। 1 2 3 4 5
উশাহ এৰি এৰি দুইখন হাত তললৈ আৰু ভৰি দুখন তললৈ নমাই লওঁ। এই অভ্যাসে স্নায়ু মাংসপেশীৰ ক্ষমতা বজাই ৰাখে আৰু দেহৰ সুস্থিৰতা তথা সজাগতা বঢ়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। अगला अभ्यास है पादहस्तासन। ইয়াৰ পিছৰ আসন আছে পাদহস্তাसन। पादहस्तासन के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी रहे। পাদহস্তাসনৰ বাবে দুইখন ভৰিৰ মাজত 2 বা 3 ইঞ্চি ব্যৱধান কৰি লওক। श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर की तरफ उठाइए। উশাহ লৈ দুইখন হাত সন্মুখৰ দিশে ওপৰলৈ উঠাব। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए। উশাহ এৰি আমি আগলৈ হালি যাম। हाथ की हथेलियों से जमीन को स्पर्श करने की कोशिश करें। দুইখন হাতেৰে আমি মাটিত স্পৰ্শ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কণ্ঠে অপেক্ষা কৰক। 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए वापस आइए। পুনৰ উশাহ লৈ আমি উভতি আহিম। हाथ नीचे कर लीजिए। হাত তললৈ নমাই লওঁ। এই অভ্যাসে মেৰুদণ্ডৰ নমনীয়তা বৃদ্ধি কৰে, হজম শক্তি বঢ়ায় আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য ৰোগীৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী। इस क्रम में अगला अभ्यास है अर्ध चक्रासन। এতিয়া আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ অৰ্ধ চক্ৰাসন। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए। দুইখন হাত আমি কঁকালত ৰাখিম। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना है। উশাহ লৈ লৈ আমি আমাৰ মেৰুদণ্ড পিছফালে সলাই লৈ যাম। थोड़ी देर रुकिए। 1 2 3 4। श्वास लेते हुए वापस आइए। উশাহ লৈ পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিম। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे। উশাহ লৈ আমি লাহে লাহে পিছলৈ হালি যাম। 1 2 3 4। উশাহ এৰি পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিম। এই অভ্যাসৰ দ্বাৰা স্নায়ু শক্তিশালী হয়, ডিঙিৰ মাংসপেশী আৰু হাওঁফাওৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। आगे कुछ योगासन हम बैठकर करेंगे। आप सभी लोगों से आग्रह है अपनी जगह पर पैर सामने रखते हुए बैठ जाए। এতিয়া আমি সকলোৱে বহি পৰা কিছু আসন কৰিম, গতিকে দুইখন ভৰি সন্মুখৰ ফালে দি আমি বহিম। अगला अभ्यास है भद्रासन। ইয়াৰ পিছৰ আসন হৈছে ভদ্ৰাসন। दोनों पैर के पंजों को आपस में जोड़ लीजिए। দুইখন ভৰিৰে আঙুলি দুয়োহাত লগ লগাই লওঁ। हाथ की हथेलियों से दोनों पैर को पकड़ लीजिए। হাতৰ আঙুলিৰ দ্বাৰা আমি ভৰি আঙুলি লগ লগাই লওঁ। एड़ियों को पेरिनियम रीजन से लगाने की कोशिश करें। গুৰুহাৰ অংশ জননাংগত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। इस अवस्था में लगभग 8 से 10 सेकंड तक रुके रहें। এই অৱস্থাত আমি খন্তেক অপেক্ষা কৰিম। এই আসনে দেহৰ তথা মস্তিষ্কৰ স্থিৰতা প্ৰদান কৰে। আঁঠু বিষৰ বাবে এই আসন অতি লাভদায়ক। মহিলাসকলৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত হোৱা পেটৰ বিষ দূৰীকৰণত এই আসনে যথেষ্ট সহায় কৰে। পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিম। দুইখন হাতেৰে সন্মুখৰ ফালে দুইখন ভৰি লৈ আহিম। अगला अभ्यास वज्रासन है। ইয়াৰ পিছৰ আসন হৈছে বজ্ৰাসন। जिन लोगों को घुटनों से संबंधित समस्या हो, ऑपरेशन हुआ हो, वे लोग इस अभ्यास को ना करें। আঁঠুৰ বিষৰ সমস্যা আৰু কোনো কাৰণত যদি অপাৰেশ্যন কৰা আছে তেওঁলোকে এই আসনৰ পৰা বৰ্জিত হয়। वज्रासन के लिए अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए एड़ी को हिप्स के नीचे ले जाइए। वज्रासনৰ বাবে আমি সোঁ ভৰিখন ভাঁজ কৰি সোঁ নিতম্বৰ তলত ৰাখি লওঁ। इसी प्रकार बाएं पैर को फोड़कर उसको हिप्स के नीचे ले जाएं। এতিয়া আমি বাওঁ ভৰিখন ভাঁজ কৰি বাওঁ নিতম্বৰৰ তলত ৰাখি লওঁ। कोशिश कीजिए पैरों का अंगूठा आपस में मिला हुआ रहे। চেষ্টা কৰিব যাতে ভৰিৰ দুয়ো বুঢ়া আঙুলি লগ লাগি থাকে। दोनों हाथ की हथेलियां घुटनों के ऊपर। দুয়োখন হাতৰ তলুৱা উৰুৰ ওপৰত ৰাখি मेरुदंड सीधा। মেৰুদণ্ড সিধা কৰি লওঁ। आंखें सहजता से बंद। চকু সহজতেৰে বন্ধ কৰি ৰাখিম। এই আসনৰ দ্বাৰা হজম শক্তি বঢ়াত যথেষ্ট সহায় কৰে, মেৰুদণ্ডৰ দৃঢ়তা বঢ়ায় আৰু শিথিল কৰি তোলে। यहीं से हम अगला अभ्यास करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। ইয়াৰ পৰাই আমি পৰৱৰ্তী আমি আসন কৰিম, সেয়া হৈছে উষ্ট্ৰাসন, অৰ্ধ উষ্ট্ৰাসন। सभी लोग घुटनों के बल खड़े हो जाएं। সকলোৱে আঁঠুৰ ওপৰত থিয় হৈ লওক। दोनों हथेलियों को कमर पर रखें। দুইখন হাতৰ তলুৱা কঁকালত ৰাখি লওঁ।
श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना है। उखा लई लाहे लाहे मेरुदंड आमी पिछले লৈ যাম। कुछ सेकंड रुकिए। 1 2 3 7 श्वास छोड़ते हुए पुनः वापस आइए। उखा एरी आमी सन्मुखলৈ গৈছো। वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन সকল বহি লওক। এই অভ্যাসে পিঠিৰ মাংসপেশী সবল কৰে, কুষ্ঠকাঠিন্য আৰু ৰাজৰ বিষ উপশম কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে। इस क्रम में अगला अभ्यास है शशकासन। আমি এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো শশকাসন। दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर कर लीजिए। দুইখন আঁঠুৰ মাজত অলপ ব্যৱধান কৰি লওক। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए। उखा লৈ দুইখন হাত ওপৰলৈ লৈ আহি श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने की तरफ जमीन पर रखिए। उखा एरी आमी दुईখন हात माटित स्पर्श कराओ। ठुड्डी को जमीन से लगाने की कोशिश करें। ठुटरी अंश आमी माटित स्पर्श কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। कुछ समय तक अवस्था को बनाए रखें। এই আসনে মানসিক চাপ ক্ৰোধ কমোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰে। श्वास लेते हुए फिर से वापस आइए। पुनः उखाह লৈ আমি আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিম। हाथों को नीचे कर लीजिए। দুইখন হাত আমি তলত কৰি লওঁ। पैरों को सीधा कर लीजिए। দুইখন ভৰি আমি সন্মুখলৈ লৈ আহিম। अभी हम पेट कर कुछ अभ्यास करेंगे। এতিয়া আমি পেট তলমূৰ কৰি কিছু অভ্যাস কৰিম। सभी लोगों से आग्रह है सिर को स्टेज की तरफ रखते हुए पैरों को पीछे की ओर करते हुए लेट जाए। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মূৰ আমাৰ মঞ্চৰ দিশে ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। अगला अभ्यास है मकरासन। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আসন হৈছে মকৰাসন। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फुट की दूरी। দুই ভৰিখনৰ মাজত 1 বা 1.5 ফুট ব্যৱধান কৰি লওঁ। दोनों हाथ के हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए। দুইখন হাত ইখন হাতৰ সিখন হাতৰ ওপৰত ৰাখি লওঁ। ठुड्डी को हथेलियों के ऊपर रखिए। ठुटरीখন আমি দুইখন হাতৰ ওপৰত ৰাখি লওঁ। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य। উশাহ নিশাহৰ ধাৰা স্বাভাৱিক অৱস্থাত থাকিব। এই আসনে সকলো মানসিক বিকাৰ উপশম হোৱাত সহায় কৰে ৰাজহাড়ৰ সমস্যা দূৰ কৰাত। यहीं से हम अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। ইয়াৰ পৰাই আমি পৰৱৰ্তী আসন কৰিম যাৰ নাম হৈছে ভুজংগাসন। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। দুইখন ভৰি লগ লগাই লওঁ। दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों के नीचे रखिए। দুইখন হাত আমি দুয়ো কান্ধৰ সমান্তৰালকৈ ৰাখিম। हाथ की हथेलियों को कंधों के नीचे रखिए। হাতৰ তলুৱা আমি কান্ধৰ দুই কাষে ৰাখিম। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठिए। উশাহ লৈ লৈ আমি বুকুৰ অংশ ওপৰলৈ উঠাই লৈ আহিম। छत को देखने की कोशिश करें। ওপৰৰ মঞ্চ আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। कुछ सेकंड रुकेंगे। এই আসনে মানসিক চাপৰ বাবে বৰ উপকাৰী। পেটৰ চৰ্বি আৰু কুষ্ঠকাঠিন্য কমোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰে। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। উশাহ এৰি পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিম। हाथों को कमर के पास रख लीजिए। हाथ আমাৰ কঁকালৰ দুই কাষে ৰাখক। अगला अभ्यास हम करेंगे शशांकासन। शलभासन। পৰৱৰ্তী আমি আসন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো শলভাসন। शलभासन के लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए। শলভাসনৰ বাবে দুইখন ভৰি লগ লগাই লওঁ। दोनों हाथ की हथेलियां जंघाओं के नीचे रखें। দুইখন হাতৰ তলুৱা আমি উৰুৰ তলত ৰাখিম। ठुड्डी जमीन पर। ठुटरी माटित स्पर्श কৰি ৰাখিম। श्वास अंदर लीजिए। उखाह লৈ घुटनों को सीधा रखते हुए दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। দুইখন আঁঠু আমি সিধা ৰাখি ওপৰলৈ উঠাম। খন্তেক অপেক্ষা কৰিম। 1 2 3 4 লাহে লাহে আমি তললৈ নমাই আনিম। সাইটিকা আৰু কঁকাল বিষৰ বাবে এই আসন অতি লাভদায়ক। এই আসনে হজম শক্তি বঢ়োৱাত যথেষ্ট সহায় কৰে। इसके बाद के अभ्यास पीठ के बल लेटने वाले हैं, इसलिए सभी लोगों से आग्रह है पीठ के बल आ जाए। সকলোৱে মেৰুদণ্ড তললৈ গৈ ফুৰি লওক।
अगला अभ्यास है उत्तान पादासन। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আসন হৈছে উত্তান পাদাসন। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। দুয়োখন ভৰি আমি লগ লগাই লওঁ। दोनों हाथ की हथेली कमर के बगल में जमीन पर। দুয়োখন হাতৰ তলুৱা আমি শৰীৰৰ দুই কাষে ৰাখি হাতৰ তলুৱা তলমুখ কৰি ৰাখিম। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को जमीन से 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे। উশাহ লৈ দুয়োখন ভৰি আমি 30 ডিগ্ৰী কোণত উঠাই আনিম। খন্তেক অপেক্ষা কৰিম। 1 2 3 4 উশাহ এৰি আমি লাহে লাহে দুয়োখন ভৰি তললৈ নমাই আনিম। এই আসনে পেটৰ মাংসপেশী অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে। নাভি চক্ৰৰ সমতা বজাই ৰখাত যথেষ্ট সহায় কৰে। अगला अभ्यास है अर्ध हलासन। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আসন হৈছে অৰ্ধ হলাসন। फिर से दोनों पैरों को मिला लीजिए। দুয়োখন ভৰি লগ লগাই লওঁ। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाएं। উশাহ লৈ লৈ আগৰ দৰে দুয়োখন ভৰি 90 ডিগ্ৰী কোণলৈ লৈ আহক। थोड़ी देर रुके रहें। এই অৱস্থাত খন্তেক অপেক্ষা কৰক। 1 2 3 4 উশাহ এৰি এৰি আমি দুয়োখন ভৰি তললৈ নমাই আনিম। इस क्रम में अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। ইয়াৰ পিছত আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ পৱন মুক্তাসন। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। দুয়োখন আঁঠু ভাঁজ কৰি লওঁ। हाथ की हथेलियों से पैरों को क्रॉस कर लीजिए। দুয়োখন হাতেৰে আমি দুয়োখন আঁঠুত ধৰি লওঁ। श्वास अंदर लीजिए। উশাহ লওঁ। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाकर घुटनों से स्पर्श करने की উশাহ कोशिश करें। এৰি আমি মূৰৰ অংশ দুয়োটা আঁঠুৰ মাজত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। খন্তেক অপেক্ষা কৰক। 1 2 3 4 श्वास छोड़ते लेते हुए वापस आइए। এই আসনে হজম শক্তি বঢ়ায়। পেটৰ যিকোনো সমস্যা দূৰ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে। पैरों को सीधा कर लीजिए। দুয়োখন ভৰি চিধা কৰি লওঁ। अगला अभ्यास है शवासन। ইয়াৰ পিছৰ আসন হৈছে শৱাসন। दोनों पैरों में लगभग 1 फीट की दूरी रखें। দুয়োখন ভৰিৰ মাজত 2 ফিট বা 1 ফিটৰ ব্যৱধান কৰি লওঁ। हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। হাতৰ তলুৱা ওপৰমুৱাকৈ থাকিব। जमीन पर रहेगी कमर के बगल में। তলত থাকিব কঁকালৰ কাষত। आंखें सहजता से बंद कर लीजिए। চকু সহজভাৱে বন্ধ কৰি ৰাখিব। এই অৱস্থাত উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক অৱস্থাত থাকিব। সৰ্ব শৰীৰ ভাৰ মাটিত এৰি দিয়ক। মাংসপেশীসমূহ ঢিলা কৰি দিয়ক। এই আসনে মানসিক অৱসাদ দূৰ কৰে। সকলো ধৰণৰ কুচিন্তা হ্ৰাস পায়। শৰীৰত এক নতুন শক্তিৰ সঞ্চালিত হয়। अगले अभ्यास के लिए बाईं करवट लेकर किसी भी ध्यानात्मक अवस्था में बैठ जाइए। পৰৱৰ্তী অভ্যাসৰ বাবে আমি বাওঁ দিশে ঘূৰি যিকোনো ধ্যানাসনত বহি লওঁ। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन किसी भी ध्यानात्मक अवस्था में बैठ जाइए। সুখাসন, পদ্মাসন, বজ্रासन যিকোনো ধ্যানাসনত বহি লওঁ। अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति। ইয়াৰ পিছৰ অভ্যাস আমি কৰিম কপালভাতি। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखिए। দুয়োখন হাত জ্ঞান মুদ্ৰা ৰাখি আমি দুয়োটা আঁঠুৰ ওপৰত ৰাখি লওঁ। इस अभ्यास में हम 20 स्ट्रोक्स कपालभाति करेंगे। এই অভ্যাসত আমি 20 বাৰ কপালভাতি অভ্যাস কৰিম। दीर्घ श्वास अंदर लीजिए লাহে লাহে আমি উশাহ লওঁ। और श्वास छोड़ते हुए लेते हुए उदर की मांसपेशियों को अंदर बाहर करेंगे। উশাহ এৰি লৈ আমি পেটৰ অংশ আগলৈ আৰু পিছলৈ লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সাইনাচাইটিছ আৰু কফজনিত সমস্যা দূৰ কৰে এই ক্ৰিয়াই। এই অভ্যাসে নাকৰ নলী পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত যথেষ্ট সহায় কৰে। 20 स्ट्रोक्स हो जाने के पश्चात शांत बैठे रहें। 20 বাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি নিজৰ জেগাত শান্ত মনেৰে বহিম। आंखें बंद करें। চকু বন্ধ কৰি ৰাখিম।
कपालभाति के प्रभाव को महसूस करें। कपालभाति কৰাৰ পিছত যি প্ৰভাৱ পৰিছে সেয়া অনুভৱ কৰক। अगले कुछ अभ्यास प्राणायाम के हैं। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী হৈছে প্ৰাণায়ামৰ কিছু অভ্যাস। प्रथम नाड़ी शोधन प्राणायाम। প্ৰথমে আমি নাড়ী শোধন প্ৰাণায়াম কৰিম। मेरुदंड और सिर को सीधा रखिए। मेरुदंड और मूৰৰ অংশ আমি পোনকৈ বহি লওঁ। दाहिने हाथ के हथेलियों से नासिका मुद्रा बनाएंगे। সোঁ हाथेरे आमी नासिका मुद्रा लगाई लওঁ। फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठी के जड़ में रखें। এতিয়া দুয়োটা আঙুলি আমি তললৈ ভাঁজ কৰি লওঁ। अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद कर लीजिए। এতিয়া হাতৰ বুঢ়া আঙুলিয়ে সোঁ নাকৰ ছিদ্ৰ বন্ধ কৰি লওঁ। बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए। বাওঁ নাকেৰে আমি উশাহ লাহে লাহে লওঁ। रिंग फिंगर से बाई नासिका बंद कर लीजिए। অনামিকা আঙুলিয়ে আমি বাওঁ নাকৰ ছিদ্ৰ বন্ধ কৰি লওঁ। दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। আৰু সোঁ নাকেৰে আমি উশাহ লাহে লাহে এৰি দিম। अब दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर। এতিয়া সোঁ নাকেৰে উশাহ লওঁ। दाहिनी नासिका बंद। সোঁ নাক বন্ধ কৰি बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। বাওঁ নাকেৰে আমি উশাহ এৰি দিম। इस अभ्यास को 3 बार और दोहराएंगे। বাওঁ নাকেৰে উশাহ লওঁ। সোঁ নাকেৰে এৰিম। পুনৰ সোঁ নাকেৰে লওঁ। বাওঁ নাকেৰে এৰিম। পুনৰ বাওঁ নাকেৰে লওঁ। সোঁ নাকেৰে এৰিম। সোঁ নাকেৰে লওঁ। বাওঁ নাকেৰে। এই প্ৰাণায়ামে মানসিক অৱসাদ দূৰ কৰে, কফজনিত সমস্যা দূৰ কৰে, উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু যিকোনো মানসিক ৰোগীৰ বাবে অতি লাভদায়ক এই প্ৰাণায়াম। 3 बार हो जाने के पश्चात हाथ नीचे। अगला अभ्यास है शीतली प्राणायाम। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অভ্যাস হৈছে शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए जीवा को साइड से मोड़कर गोलाकार आकृति बनाएंगे। शीतली प्राणायाমৰ বাবে জিভাখন গোলাকৃতি কৰি লওঁ। ट्यूबनुमा जीभ से धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचिए। গোলাকৃতিৰ জিভাৰে আমি উশাহ লওঁ। जीभ अंदर कर लीजिए। জিভ ভিতৰলৈ সোমাই আনি मुंह बंद। মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিম। दोनों नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। দুয়ো নাকেৰে আমি উশাহ এৰি দিম। एक बार फिर से जीवा को ट्यूब जैसा बना लीजिए। গোলাকৃতিৰ জিভাৰে আমি উশাহ লওঁ। জিভা আৰু মুখ বন্ধ কৰিম আৰু দুয়ো নাকেৰে আমি উশাহ এৰিম। পুনৰ গোলাকৃতিৰ জিভাৰে আমি উশাহ লওঁ। জিভা আৰু মুখ বন্ধ কৰি আমি দুয়ো নাকেৰে উশাহ এৰিম। प्राणायाम के क्रम में अंतिम अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाমৰ অন্তিম অভ্যাস হৈছে ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়ামৰ বাবে আমি সন্মুখী মুদ্ৰা লগাই লওঁ। दोनों हाथ के हथेलियों से अंगूठे से कान बंद कर लेंगे। এতিয়া দুইটা হাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰে দুইখন কাণ বন্ধ কৰি লওঁ। बाकी उंगलियों से आंख, नाक और होठों के ऊपर আৰু বাকীকেইটা আঙুলিৰ দ্বাৰা চকু, নাক আৰু ওঠৰ ওপৰত ৰাখে। धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए। এতিয়া উশাহ লওঁ। श्वास बाहर छोड़ते हुए भौंरे जैसी आवाज निकालें। উশাহ এৰি ভোমৰাই গুঞ্জন কৰাৰ দৰে 3 বাৰ আমি এই প্ৰাণায়াম কৰিম। हो जाने के पश्चात दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में দুইখন হাত আমি তললৈ লৈ আহিম। চকু বন্ধ কৰি ৰাখিম। এই প্ৰাণায়ামে মানসিক চাপ, ক্ৰোধ, কুচিন্তা প্ৰশমিত কৰে। গুণগুণ শব্দই স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু মনৰ দৃঢ়তা প্ৰদান কৰে। अगला अभ्यास है ध्यान। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী হৈছে ধ্যান। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में रखें। দুইখন হাতৰ আঙুলি জ্ঞান মুদ্ৰাত আমি ৰাখি লওঁ। आंखें सहजता से बंद कर लीजिए। চকু সহজতাৰে আমি বন্ধ
की प्रक्रिया सामान्य स्वाभाविक अवस्था ये अवस्था हेरी आमी निजर मन लैया दिन अनुभव ठांडा ठांडा हावा आमार माजे आहिছে और निशाहर आमार गरम जी बायु आमार नाके ओলাই গৈছে যিকোনো ভাবে ধ্যান অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ মানসিক চাপ দূর করে অতিপাত ক্রোধ কুচিন্তা প্রশমিত করে মন আর মস্তিষ্ক সূক্ষ্ম আর শীতল করে ধ্যানৰ জৰিয়তে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰি के साथ ध्यान की समाप्ति करेंगे ओम महेश्वरा नामी ध्यान समाप्ति करें श्वास अंदर लीजिए वो खा लो वापस में रखिए चेहरे पर आंखों पर लगाइए योगाभ्यास की समाप्ति के बाद अगला करने संकल्प आप सभी से आग्रह संकल्प लेने के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए अपने सुरक्षित स्थानों पर छोड़कर शांति शांति दुईखन हाथर तला मोहारी मुखमंडल और चकुत लगाई लो और चकु खुली लो नमस्कार धन्यवाद सकलोলৈকে धन्यवाद যোগাভ্যাসত অংশগ্ৰহণ কৰা সমূহ ব্যক্তিক ধন্যবাদ জনাইছো সদস্যবৃন্দ আমি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো